वीडियो साउंड Good afternoon. Good afternoon, participants in JIET Jodhpur and in our studio. In the second session before lunch, in this ongoing course on manufacturing resource management, today we will discuss robotics fundamentals. So, as all of you know by now, that MRP2 or manufacturing resource planning is concerned with all aspects of manufacturing: the raw material, the process layout, the inventory, the tooling. The idea is to uh, minimize the waste. So, in this connection, automation systems they play an important role, and robots are very important part of automation. They are used widely in material handling and in many assembly and joining operations. So today we'll have an overview of robotics during this session. So during our discussion, we will very briefly go through historical perspective, then robot definition, robot configurations, basic components, kinematics, dynamics, trajectory, and programming. If we look at the history, the word robot was first used in 1921 by a Czechoslovakian playwright, Karel Čapek, in his satirical drama titled Rossum's Universal Robots. The word robots in this title of the play was derived from the Czechoslovakian word robota, which literally means forced labor. Following the use of the word robot, even the term robotics was coined by a author who was also a professor of biochemistry and who used to write stories. So he used the word robotics in his short story titled Run Around. And the author was Isaac Asimov. So both the words robot and robotics they were coined or initiated not in the context of automation but in the context of literature. If we look at what basically a robot is, an industrial robot is a mechanical manipulator that can be programmed to perform a variety of tasks. And commonly, the robots are used for welding, material handling, assembly, etc. So it's a mechanical manipulator. And if you look at this picture, this is also a mechanical manipulator. If we think over that what is the difference between this mechanical manipulator and this mechanical manipulator, then the answer is the ability to be programmed. Whereas this mechanical manipulator is operated by the operator using a joystick, a robot is programmed. A robot can also be used by an operator using a teach pendant, but it also has the capability to be programmed, and that's where its strength lies. So its strength lies in actually two things. One is programming capability. Second is the kinematic chain. The chain is in such a form. Okay, we'll just check.
maybe. Our microphone is on right now. Hmm. Can you hear us now? Here is only you. Where are they? है नहीं यहाँ पर. रिफ्रेश करना है. हाँ सर, ये हम लोग का तो ये कर दिए आपका. हाँ सर, रिफ्रेश कर दीजिए. But our mic is on. आपका Our microphone is on. हाँ ऑन है. हाँ सर. हाँ सर, ज्वाइन कर दिया. हाँ जी, हो गया. आवाज आ रहा है ना So सर? can you hear us now? हाँ सर. हाँ, आवाज आ रहा है. Okay, thank you. थैंक यू. हाँ हाँ, ठीक है. सर चलेगा वापस. शिफ्ट एस्केप दबाना. डायरेक्ट उसको. Okay, so we just got to know that you were not able to receive our audio. So I will quickly go through the 4-5 slides. So these are the contents of our presentation. Then we discussed the historical perspective, that how the word robot and the word robotics were coined. Then we saw the definition of, not the definition, but you can say a statement that what is a robot. And then we were discussing that this is also a mechanical manipulator, but it does not have the capability to be programmed. Okay, so let us now come to the robot definitions. The Webster Dictionary definition of robot is that it is an automatic apparatus or device that performs functions ordinarily ascribed to humans or operates with what appears to be almost human intelligence. And the purely technical definition of robots, as given by Robotic Institute of America, is a robot is a reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move material, parts, tools, or specialized devices through variable programmed motions for the performance of a variety of tasks. So we were discussing that a robot has two strengths. One is the its kinematic chain, and second is its ability to be programmed. So when we talk of the kinematic chain, a robot has a number of configurations, but these are the four basic configurations: Cartesian, cylindrical, spherical, and articulated. If we start with Cartesian, it has 3 degrees of freedom. Now here, when we are talking of the robot configurations, we are not considering the uh, tool attached to the wrist. We are only talking of the manipulator up to the wrist. So Cartesian robot has 3 degrees of freedom, and all the three are linear and at right angles to each other. As we go to cylindrical, 2 degrees of freedom, they remain linear, but the third one becomes rotational. When we move to the spherical configuration, only one remains linear, the other 2 degrees of freedom, they become rotational. And in the articulated configuration, all the 3 degrees of freedom are rotational. Apart from these four basic robot configuration, there is a special configuration called SCARA, which also we will discuss in the forthcoming slides. In Cartesian robots, as we have discussed,
It has three principal axes of control which are linear and are at right angles to each other. A popular application of this type of robot is a computer numerical control machine. So here in the diagram you can see this slide can move on these guide rails in, let us say, X direction, the Z direction and the Y direction. So let us see a video of this. So this is the video of a robot making a drawing. It's a pencil is being used as a tool, and you will notice that the motions of the three motions of the robot are perpendicular to each other and they are linear. The circular shapes that the robot is able to draw, that is by combining the X and Y motions. Here in the Z motion, the pencil is only moving up and down, but the drawing has been made, the straight lines have been made by using either X or Y, and the curves and the circles have been made by simultaneously operating the X and Y joints. The next is cylindrical robot. So it has a horizontal arm which is mounted on a vertical column, and this column is then mounted on a rotating base. So this is the horizontal arm and this is the vertical column. So here we see that the Z motion is linear and the Y motion is also linear, but one degree of freedom has been converted from linear to rotary. The horizontal arm can slide vertically on the column. So let us see a video of this. So this is one linear motion, and then the up and down motion is the second linear motion. And then we have the rotary motion, that is the third degree of freedom. So it is called cylindrical because as the robot wrist will move up and down and it will move in a circle, it will cover a volume like that of a cylinder which is hollow, because the the wrist cannot go into this portion where the main robot body is. So its work volume will be like a hollow cylinder. Then we have the spherical or polar. It is also called polar configuration. It consists of a horizontal arm which is mounted on a rotating base. So this is the horizontal arm. The wrist can move towards the center and outwards away from the center. So this motion is of the arm is linear. It is mounted on a rotating base. So this one is the rotary degree of freedom. And then it can also move up and down. So this is the third degree of freedom, which is also rotational. The arm can also move through certain angle with the base as the pivot. The horizontal arm can slide horizontally. Sorry. Let us see a video of the spherical robot. So one rotary, second rotary,
and third linear. Then before we move on to the articulated robot, which has all three degrees of freedom as rotational, we will discuss the special configuration SCARA. Now from the diagram you can see it also has two rotary and one linear. So it is similar to what you can call a polar or a spherical, but its kinematic chain is made in such a way that its work volume does not match with that of the polar or spherical robot. So SCARA stands for Selective Compliant Assembly Robot Arm or Selective Compliant Articulated Robot Arm. So this configuration is as if a human extends his and does not move the arm in the vertical plane about the shoulder joint, but only moves the arm in the horizontal plane about the shoulder joint and about the elbow joint, then it is similar to a SCARA. Now, in the hand, you can assume there is a tool which can move up and down. The hand of the human arm cannot move up and down, but only the tool in the hand can move up and down. So that becomes similar to the SCARA robot. So this is the picture of a SCARA robot. The arm is compliant in the XY direction. That is in the XY plane. It can move uh, quite dexterously, but it is rigid in the Z direction. So that is why the term selective compliant. The jointed two-link arm layout is similar to human arms, hence the term articulated. This feature allows the arm to extend into confined areas and then retract or fold up out of the way. Let us see a video of it. Let us let me directly run this. Hmm? No, we can do it. So let us run this video because okay. Okay, somehow I'm not able to play this file right now. I will play it again, maybe in the after lunch session. I will play it again. Let us try if it plays. Anyway, so it is not playing. So we will download some other file and we'll play it. So let us go to the articulated robot. So an articulated robot consists of two shoulder joints, one elbow joint, and two or three wrist joints. It is very similar to the human arm. You can very well imagine that our shoulder joint has very distinct two motions. At the shoulder, we can move our arm either in the horizontal plane or in the vertical plane or a mix of both. Then one elbow joint and then the wrist joints. So these are some examples. Let us see a video of. So here we will see that how does an articulated robot work and its different degrees of freedom.
So this is 1 degree of freedom at the shoulder joint. Just like humans can move their arm up and down. Then this is the elbow joint. Then again the second degree of freedom at the shoulder joint, where we can move the arm in the horizontal plane. So these are the 3 degrees of freedom of the robot arm. Then we can have the degrees of freedom of the tool that we will see, but right now it is again repeating its shoulder joint second degree of freedom. Then again the elbow joint. Then here we have the motions of the wrist or the degrees of freedom of the wrist. This is called a roll, what you are seeing right now. So this motion of the wrist is called a pitch. So this is the third degree of freedom at the wrist. So this particular robot that you are watching, it has a total of 6 degrees of freedom, 3 for the manipulator and 3 for the wrist. Now, what are the basic components of a robot system? First of all, we have a manipulator, which is basically an open kinematic chain. It is a series of rigid members called links connected by joints. So you can imagine your arm. Your arm has very distinctly two links, the upper arm and the lower arm, and then it has the joints like the elbow joint, the shoulder joint, and then at the wrist. Then actuators, which provide power to the manipulator. So human arm has its muscles as the actuators, and robots will have electric motors or hydraulic and pneumatic actuators which will provide power to the manipulator. Then we have the sensory devices in the robots to monitor position, speed, acceleration, torque, etc. There are many other parameters which also we can feed to it. Then the controller, which provides the intelligence to make the manipulator perform in a certain manner. And then power consumption unit, because in a robot we are using so many analog and digital parts, so power consumption unit is required. So when a controller will use a some signal for the motor to work, then we require signal conditioning and the power consumption to supply the required amount of current in the motor so that the motor can provide that much torque. So this photograph that you see is the robot we have in our laboratory. Uh, Now it's quite old. We have another new robot, but it's a very compact system and it is a very good system to understand all about robotics. So here you see the manipulator of the robot.
This robot was called Sweetbot -ER. This is the teach pendant of the robot. Using the teach pendant, we can manually do the individual joint, or we can give XYZ commands to the robot. And this is the controller. All the robot motors, all the robot sensors, and the teach pendant, they are connected with the robot. Also, to the robot controller is connected this PC. So we also have a software for this, using which we can also operate the robot and program it. If you look at the manipulator, so these are the scoreboard arm links and joints. We have a base which is bolted to wherever you want to fix it. On the base is the body, which is basically here the shoulder actually, then the upper arm and the forearm and the grip. Talking about joints, we have a joint here. Both of these are rotary joint. Elbow is also rotary. So wrist is also rotary. Roll is also both are rotary. So it has 5 degrees of freedom, which are all rotational in nature. Then scoreboard has number of actuators and sensors. So the all the motors which are required to operate the different joints, they are mounted in this part. So this is a photograph from the front side. As you can see, one, two, three, and four motors. So these four motors are DC servo motors. So this part is a motor, this part is a gearbox, and this part is a controller, which is mounted to give the feedback of the position and velocity of the motor to the controller. There is a fifth motor which is mounted inside the base vertically. So that motor is responsible for rotating the whole of the robot in the horizontal plane. And then there is a motor, this motor which is responsible for the second shoulder joint, and the motor at the back that is responsible for the elbow joint pushing. And these two motors are responsible for the pitch and roll of the robot. So as we have discussed, the motor has a gearbox and a motor. Now coming to the sensors, the robot has microstructure and encoder. Motor we have already seen, they are part of the DC servo motor. The microstructure is installed along with cams. So one pair you can see here, one pair here, one pair here. There is another pair which is mounted inside. So these microchips and cam pairs are used to determine the home position of the reference positions of all the joints. So this is a photograph of the cam and microchip pair. This is a cam and this is a micro. And what you see is a small white portion. This is actually the button which gets depressed or pushed by the cam. It looks like a push, but it has a very profile over here. When the joint moves and when this profile comes and operates this switch, the robot knows that this is the reference position for this particular joint. So similarly, for all other joints, it has cam and micro switch pairs. Now, there are two very common terms which are used in the robot. It's forward kinematics and inverse kinematics. In the diagram, what we see is a picture of the links and the joints. And here you can see this is the tool, and the position in space of the tool with respect to the base and its orientation, it is decided by the joint angle
and the length of the links. So forward kinematics says that when we are given a set of joint angles, we are able to compute the position and orientation of tool frame relative to the base frame. Where you can see a frame, XYZ frame has been attached to the tool and another XYZ frame has been attached to the base. So the distance from the origin of the base frame to the origin of the tool frame, it gives us the position of the tool and the angle between x of the tool frame, x of this, similarly y of this, and z of this, and z of this, it tells us about the orientation of the. Now, when we take the inverse of it, and what happens, we call it inverse kinematics. Now, what does that mean? That let us say we are already given that what should be the distance between the origin of the tool frame and the origin of the base frame. And now we have to decide what joint angles should individual joints have so that this distance is equal to what is desired. Not only the distance but also the orientation. That what should be the angle between the x of the tool frame and x of the base frame. Y of the tool frame, y of the base frame. Z of the tool frame, z of the base frame. So when we are given these two things, the distance and the orientation, then the controller has to calculate that it should move the individual joints by how much degree so that the tool is at desired position and in the desired orientation. So that is called inverse kinematics. So when we come to dynamics, here we are concerned with the forces. So when a robot is doing a work, it will exert a force on the workpiece which it is holding or which it is maybe assembling or moving. So these forces are also required to be controlled. So when we talk about force considerations, we call it dynamics. So dynamics is controlling a manipulator to follow a desired path involves calculating actuated torque functions by using the dynamic equations of motions of the manipulator. Then we have the concept of trajectory generation. So when a manipulator is moved from one point to another by causing a number of joints to move as specified by a single function of time, we call it a trajectory. And trajectory in brief is the time history of position, velocity and acceleration of each joint. So trajectory generation involves creating motion functions for the joint. It's quite complex mathematically also and there are algorithms which are implemented. So robot controllers they actually do a great job in computing in real time the required values. So that is about the theory. Now we will let us briefly see about the scoreboard TR4U and how can we program it. So we have already learned that this particular robot is a vertical articulated robot with 5 revolute joints designed and developed to simulate an electrical robot. With a gripper dash, the robot has 6 degrees of freedom. So in this particular case, in the robot we're talking, this gripper can either open or close the fingers. So that is you can call as 6 degree of freedom. Otherwise, the articulated has 5 revolute joints only. This design can be expected to be positioned and oriented arbitrarily within a large workspace. This photograph we have already seen. This also we have seen. Let us look at work volume or the work. Now here in this picture, you see the arm of the scoreboard robot extended fully in the horizontal plane. Now, when the base is rotated, the arm can move in XY plane. And for this particular robot, you can see this distance is 610 millimeter or 2 feet 24 inches.
And this particular arm can rotate through 330 degree. In some robots, it can be more than 360 degree also. Then this is from the side view. Here the arm has been positioned in a certain fashion, and in the diagram also you can see the arm in the same fashion. So we are given the length of the links, and with the joints through which this joint, and this joint can be moved in the vertical plane. This is the area through which the wrist can move, in which the wrist can move. So when we combine the top view and the side view, we get a work volume in which the robot wrist can move around. Now, this is a little bit detail about the encoders which are attached to the motors of the robot. So this is the shaft of the motor. So the motor is on this side. At this end of the robot, we have a disc with a number of holes in it. It is mounted on this shaft, and this disc rotates through this you can say arrangement of phototransistors and LEDs. Here, there is a one transistor and one LED. Similarly, transistor is a LED. So this forms a pair of LED and phototransistor. Now, when nothing is between the LED and the phototransistor, light from the LED will fall on the phototransistor. But if there is some break object between this, then the light will not fall. So this stopping and emitting of light is done by the rotation of the disk. Because this phototransistor is placed here. On one side of the disk lie both the LEDs, on the other side of the disk lie both the phototransistors. So when the a hole on the disk with circle diameter is aligned with the LED and the phototransistor, light will fall on LED on this, and when the hole is not aligned, light will be stopped. So as the motor rotates, the hole will come between the LED and the phototransistor, alternately opaque portion and the hole will come. What we will get is we will get a pulse wave generated from the phototransistor. So the location and movement of the each axis is moved by an electro-optical encoder attached to the shaft of the motor which drives the axis. When the robot axis moves, the encoder generates a series of alternating high and low axis signals. The number of signals is proportional to the amount of axis motion. The sequence of the signals indicates the direction of the movement. So that is why the two pairs are used basically. Otherwise, how much angle the motor has moved can be determined by only by counting the number of pulses from one phototransistor only, and the frequency gives us the speed of the motor. But to find out whether the motor is rotating in clockwise or anti-clockwise direction, we need two pairs of LEDs and phototransistors. So this is a close-up of the micro switch we were talking about. The scoreboard has five micro switches, one on each axis. During the whole procedure, the robot joints are moved one at a time. Each axis is moved until its own switch is activated. The axis is then moves slightly until the switch shuts off. At that point, the joint is at home. When all joints are at home, the robot is at home. Here we see the photograph of the controller. This is the front view and this is the back side of the controller. On the back side, we see a number of connectors. Now, this is a D50 connector which connects all the robot motors and the encoders and the micro switches to the controller. This USB is the connection with the PC, and this I think it's RJ45 connector which connects to the teach pendant, and this is the power cable.
On the front side, we have a number of digital and analog inputs and outputs. So here you can see this is digital input, this is analog input, these are digital outputs, and these are analog outputs. So we can attach additional sensors and actuators here so that the program will know what is happening in the environment, also create potential in the environment. This is a close-up of the teach pendant. The teach pendant has a cluster of buttons, two special buttons, and one LCD display. So this emergency button is required, a universal mandatory requirement that every teach pendant of a robot must have an emergency stop so that the robot can be stopped immediately when this button is pressed. This button it says teach on one side and auto on other side, and now the knob is set to auto. So when the knob is set to auto, the teach pendant becomes dysfunctional, and the robot control goes to the software in the PC. When the knob is set to teach, then the software becomes dysfunctional and the control is on the teach pendant. The teach pendant is used for moving axis, recording position, and sending access to recorded position. Now, for this particular robot, this is the interface software which can be used to control and program the robot. For example, what you are seeing on the screenshot is the interface of the software, the title bar, the menu bar, the toolbar. At the bottom, you see two windows, a manual movement window and a teach position window. The manual movement window is like a teach window. So when the software is in control, from here we can select individual joints. You can see here the joints option as well as exploded option. So when the joints option is there and we press either this button or this button, so say joint one. If we press this button one, the joint will move in, let us say, vertical direction. If we press two, it will move in anti-lock. Similarly for joint 2, 3, 4, 5, so on. And we can also specify the speed at which the joint will move. If we choose the XYZ option, sorry, if we choose the XYZ option, then this interface will slightly change here. In that case, now we any command we give is taken as X, Y, and Z position in the of the wrist, and to move the wrist accordingly, one or more than one joints are operated by the controller so that that much of X, Y, and Z motion can be achieved. Then this is a teach position window which can be used to record the positions. For example, we can move this to a certain location by using the manual movement, and then we can say here record position. So the robot will in its the controller in its memory will record the joint angles for all the joints which have made the tool occupy a certain position in the space. This position is right program, this video is right program, and this is the commands for this particular robot which are available. So we select a command, and that command is shifted to the program. Then we will save the program and run the program. Let us see an example. We will skip this. We have discussed all these files. Let us see a robot program. First, let us briefly see the program, then we will see the video of it. It is a pick and hold. What are the requirements? We have to know from where the input is to be picked and where it is placed. So that position, first of all, must be passed manually to the robot and recorded.
We must also decide that at what speed should the robot arm move during the operation. For example, if the robot is carrying a bucket full of molten metal, it has to be moved at a slow speed. But if it is carrying something which is very robust, even if it hits something or it falls down, nothing will happen to it, then it can move it at a high speed also. So after we record the position and decide the speed, the program is coded using relevant commands. And then the program is executed resulting in the robot performing required operation. So now let us see this program what we use for this. We have used some command from this side. Right now the program is blank. You select the first command, go to position, right? From here, go to position option. And this window in the next slide, it will be shown you at a little larger scale. So you will be shown that what is the target position, where the robot is to. अभी जस्ट This is okay. So you can also voice is clear and continue. रिफ्रेश कर Hmm? रिफ्रेश कर फैन Okay. हेलो। हाँ सर जी Can you hear us now? हाँ हाँ जी सर, जी सर। Okay, ठीक है. ओके So we were at this slide. So we got this window by clicking on Go to Position command. Let us look at this window closely. So we specify at which position do we want the robot race to go. So this position was earlier recorded manually, and we also decide the speed. And that command appears there, go to position 1, speed 5. Similarly, we select the appropriate option from here and the commands are added to the program. Now the complete program has been created. Right? So this is the complete program. Go to position 1, speed 5. Open gripper, go to position 2, speed 1. That means lower speed. Wait, 30. 30 means 3 seconds. Close gripper. Again, go to position 1, speed 1. Go to position 4, speed 5. Go to position 5, speed 1. Wait. Open gripper. Go to position 4, speed 1. Close gripper. Go to position 1, speed 5. So in this we have used four positions, 1, 2, 4 and 5. Position number 3 was for the home position. So we'll run the video and as the video runs, I will speak the command. So this is lying at position number 2. This object which is to be lifted. Go to position 1. Go to position 1. Now we say open grip. Now we say go to position 2. Now we say close wait, then close grip. And again go to position 1.
Go to position 4. So this is position number 4. Now position 5. Wait and then open the gripper and release the object. Again go to position 4. Then again go to position number 1. So now the program is running in a loop. So if new components keep on coming here, it will go on transporting these components to a new location. So it is a pick and place operation. By using appropriate variables, we can also take the program so that the robot stacks the object one above the other. So that will make the program slightly more complex. So that was about the introduction to robotics. We have discussed the fundamentals of robotics, and we've also seen how the uh, programming is done. So if the participants have any questions, they can ask. We'll be happy to reply. Because actually, the body is anything. Okay. So in case the audio from the IIT Jodhpur somehow have come to if you're not able to receive their audio, you can also ask questions by chatting. You also have an option of chatting on your screen. So by chatting also you can send us your question. The question. मतलब जी हाँ जी हाँ जी सर जस्ट यूज कर रहा ओके चलो देखो हाँ आप लिखते जाओ बस हाँ लिखो प्लीज एक्सप्लेन द वर्क envelope Oh of yes, actually, okay. The question is explain the work envelope of SCARA manipulator. Right? So we will show the video which we are not able to show you. So that video will itself explain the work envelope. However, if you can imagine that if you bend your arm, the SCARA arm can move in the horizontal plane at the shoulder joint or at the elbow joint. It cannot move up and down. So the arm can move only in one plane, but it has two movements at the shoulder and at the elbow, like shoulder joint and then elbow joint. So you can say that arm movement is only in a lamina, it's only in one plane. But any tool which is attached to the hand or the rest of the robot, SCARA robot, that can move up and down. That particular tool can move up and down. So you may say it's basically a plane area, and because its configuration is similar to human arm, so in a circular area it can move, and then only a tool can move up and down. It is not exactly a volume, but it's, you can say it's a limited volume in which the tool can move.
If there is any other question, but we'll also show you maybe the tomorrow afternoon session. We'll show you the video of this Skara robot also. Otherwise, also on YouTube also you can find good videos of Skara robot. Any other question? If there is no question, जल्दी लिख लो so what the question is, what is the difference between spherical and Skara work envelope? You see, a spherical or a polar robot, the wrist can move in a kind of a sphere or a polar volume. Here, the specifically, the wrist can only move in a single plane. So I will not say that as the wrist can move in a volume, but the wrist can move only in a plane. But only the tool can move out of that plane. That is the difference. क्वेश्चन है क्वेश्चन Okay, thank you. Thank you so much. So now we will break for the lunch and we will meet again at 2 p.m. You have to share it. So we will meet again at 2 o'clock for the next session. एक्सटेंडेड आवर में आप लोग उधर जाकर शुरू सकते हो आफ्टर 2 पीएम आज बता देंगे
कॉलेज सील लगी हुई है, हर पेज पे सील लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर कवर लगा है, तो उसके लिए क्या है? ऐसा होता है, बराबर है स्टूडेंट। हाँ सर, जो भी फैकल्टी फ्री है जो क्लास में मिल रहे हैं उसको मारे। हाँ, और वापस शुरू कर लेगा। तरफ कितने लोग
हाँ अच्छा 20-25 केवल 12-15 हो तो भी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर क्लास रहती है क्लास में फैकल्टी जा रहे हैं और बाकी ट्रेनिंग आते हैं कैसे आप हाँ अच्छे से बहुत बढ़िया हाँ वो रोबोटिक्स जो है अच्छा हाँ हाँ पांच छह टाइप के रोबोट अच्छा अच्छा रोबोट वाले फाइनल हो गया आगे अब हमने क्या क्या करना समझते हैं प्रोजेक्ट शुरू कर लिया हाँ दूसरा है ना तो अभी यही हम नया हमारे समझना शुरू हो गया तो शिक्षक ने लोगों को बताया कि भाई आप रोबोट में प्रोजेक्ट ले सकते हो लेट स्टार्ट हो गई ये कुछ एजुकेशन रहेंगे पूरा होगा नहीं होगा एटलीस्ट आप शुरू करो शुरू करेंगे तो कई लोग शुरू करेंगे तो पहला बैच है फिर उसके जो नेक्स्ट बैच आ रहा है उसके और भी ज्यादा आपने रोबोट लैब भी है रोबोट बनाया है और उसमें ये भी कर सकते हो लर्निंग भी कर सकते हो वो समझिए कि कंप्यूटर वाले को मैकेनिकल फील्ड में करना चाहते हैं क्वालिटी क्लिनिक हाँ तो देखिए आप तो उनका हम इवोल्यूशन कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं जो मैकेनिकल का प्रोजेक्ट इम्तियाज होगा वो दे देंगे लास्ट वो क्या था कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम हाँ उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी शामिल हाँ मतलब आप को कहोगे कोई बाउंड्री लाइन नहीं की सर लेकिन वर्क टुगेदर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो आपस में मिलकर कर सकते हैं अदरवाइज तो उनके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें माइक्रो प्रोसेसर वो बहुत रिमोट हो जाएगी तो मैकेट्रॉनिक्स और मैकेनिकल
क्या बोलते थे कहाँ से देती है कैश की देती है अरे वो तो कोई बात नहीं देखता हूँ मैं तो आगे करूँगा तो
चेष्टा करता हूँ तो ये
स्पीड से अरे वो एक और 20-30 दिन में ट्रेन नहीं चलेगा, क्योंकि चलती गाड़ी में जितना चार्ज करना वो राव जी लोग लेना पाँच छह को मतलब यही है कि हम हैं किसी दूसरे कॉलेज के, ये पता नहीं कौन है। हाँ ये हम है, तो वहाँ पर बस मेल चेक करते रहना, जैसे मेल आएगी इसे रिक्वेस्ट करते रहो, मेल आएगी इसमें ये काम करना। ठीक है भाई, 15 मिनट करता हूँ मैं, 5 मिनट में बस आज हमारे पास टीवी की एक के लिए बैठी वो भी हमारे है जी, मतलब अभी तो हमारी है, अभी आपके है। हाँ यार टाइम निकालेगा बाकी इसमें चेक करते हाँ जी ठीक। अभी आ रहा है ऑडियो?
चलो मैं कब तक बुलाता हूँ सर। ठीक है। मैं बुला लेता हूँ और ये मिनट फाइंड सही है। मैंने राज हाथ में लो ठीक है बस क्या कांग्रेस की
जी हाउ आर यू? आप अच्छा अच्छा एमए वाले कितने अच्छा अच्छा ठीक है एक्सपर्ट देश से एक्सपर्ट नहीं है। हाँ जी तो वो आएगा। अच्छा जो पार्टिसिपेंट है आना देखो कितना खोल रहे हैं ईयर आया मुझे चक्कर गया है कि भाई ईयर भी बोले जिस तरह बैंगलोर to जयपुर गया जयपुर क्यों प्राइवेट एयरलाइन पे हम वो मेरे लिए चक्कर होता है मैं कहा कोई जगह दो में इक्वलेंट एयर रेटिंग के साथ साथ पूरी कर ली गाड़ी जल्दी ठीक है क्या करना यार है मैं करना भी वैसे तो ये वो स्लाइड शेयर करना है उसी से बाद में कंट्रोल क्या होता है स्लाइड शेयर के लिए इसमें शेयर करिए स्लाइड शेयर होगा पहले शेयर करेंगे उसके बाद फिर वो इसमें तो ये क्या मतलब इंट्रोडक्शन देने पहले हाँ मैं बातचीत करूँगा हाँ चल रहा है शेयर कर इसमें आना पानी है यहाँ पे आप कहाँ से बेंगलोर which place okay okay how's your coming here when did you come here by year you so you have come to attend this program and I'm teaching this program ज़्यादा मत यार स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा तो भी पार्टिसिपेंट कहाँ किया जयपुर एक ही बात है यार ठीक है करें फिर आवाज आएगी यार इसकी एक को भी चला लीजिए ठीक है नहीं मैं एक चला लीजिए जयपुर Okay, friends, so very good afternoon from all of you. My friends are Jaipur. Am I audible? उनका वॉइस नहीं है अच्छा so I can't interact with them. Then how will I interact with them? Only you can tell, you can ask. If there is any question, they will ask. I am to discuss all this issue. How are you going to discuss them? Only they are asking the question. So that is okay. Huh? From their side, some technical problem. Okay. Then it is only one-way communication. हाँ एक बात करो आप कम्युनिकेशन नहीं तो मैं क्या करूँ अच्छा सर से बात करेगा वो क्या तरफ से डिस्कशन करना हेलो गुड आफ्टरनून ऐसा था कि आई वांटेड टू इंटरेक्ट एंड आस्क यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हिच आई विल टू स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन so then if there is no interaction how will I do the discussion and otherwise other process
Okay. So that is there. Definitely, you can ask me something from chat. But if I am to ask you something, then how will I ask you? चलो ठीक है हाँ that is आप आ गया इधर ही आ जल्दी so friends I will be interacting with the participant or professor available in Chandigarh and you will be listening to that let him respond to the queries and based on that queries if you have anything to say then definitely you are most welcome to say me okay friends a very good afternoon to you all I am Dr. Rakesh Vats I am professor at Media Center in Greater Chandigarh and in this institute for the last more than 30 years. Before that, I have worked in industry for 2 years, and my doctorate is on quality management, total quality management. Most of my work is on total quality management, and it is industry based. When I completed my doctorate during the year 2000, I think at that time, and ISO was not being sold as it is being done today. At that time, there were only 250 companies, good companies in the region, total northern region, which were having ISO 9000. And I have worked with 100 of them. So, quality management is my area of work. In addition, I am looking after many activities in the NITER. I am heading presently as a professor and head media center. I have also headed administration for 7 years in the institute. In addition, I have headed ETV, I have headed continuing education, and many departments I have headed. Presently, as I told you, I am from Media Center. So, friends, you are attending a program on manufacturing resource management. Let me start with a very basic question. There are three issues involved in the title. First is manufacturing, second is resource, and third is management. Manufacturing means something you are producing. Okay. Now, second issue, what it is? What is the resource? Resource means man material. Anything more? Because that is very much important. Three, unless you are able to complete all the resources, you can't complete production. Man, material, machine. These are the only three resources, not others. Let me tell you, anybody who would like to comment on what I am asking you, he is the person at the NITER is telling there are only three resources, mainly three resources, man, material and machine. Machinery and machine, man, material and machine, PM. Do you agree with him or would you would like to add something to it? Let's have an interactive session. It's very important because you may have learned many things during these past 2.5 days and talking on manufacturing resource management. At least you must know what it covers. That's very, very important. Unless you know all the different angles of manufacturing, you can't have the good manufacturing at all. You can't have good production at all. So knowing all the angles is equally important. And for that, knowing of resources is very, very important because third word is management. Management of what? Management is related with management of resources. That's the reason the middle word is most important today. What are the resources and how is a resource defined? What do you mean by resource? You have said man, material, machine. It's okay. These are types of resources. What is a resource? What do you must be calling something as a resource, like you said, man, material, and machinery. Okay. Anything else? There may be many. But what is a resource? Let me tell you, resource is a thing on which you can bank upon at the time of need. It's a general layman's definition. Resource is a thing on which you can bank upon at the time of need. Huh? Definitely, yes. Monetary resource is there as well. Potential is a resource. Anything more than that? There are many more resources. Let me tell you, today we are talking of 9 M's. Earlier we were talking of man, material, machines, and beyond we were not going. There are
today in today's scenario is 9 resources, 9 M's. Pardon? Definitely. So as I told you, resource is a thing on which you can bank upon at the time of need. And he has added one more to your 3. It becomes now 4. There are still 5 left. Then 5, I may not be knowing all. 5 are movement. Time is a resource. Time is a resource. Okay? Movement. Then space. Space in terms of M is called motherland. Okay? Management itself is again a resource. I think now we are having it. No? Movement. Have you written movement, management, motherland, movement? I think by now it is almost 9. Motherland is a space. Space means जो आपको जगह चाहिए एरिया एरिया चाहिए ना आपको उसके बिना तो अनलेस आपके पास एरिया ही नहीं है तो हाउ विल यू हाँ इट्स अ रिसोर्स कई बार किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एरिया इज अ बिग इशू समटाइम्स ट्रांसपोर्ट मूवमेंट में आ गया ना उसी को रिसोर्स ले लिया मूवमेंट इसी को कहा है ना मैंने मूवमेंट ऑफ मटेरियल मूवमेंट ऑफ मैन मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ठीक है ना इट इज अ मस्ट unless you are able to transport the material you can't have a good production you can't have good manufacturing and based on these 9 resources as I said 9 M's I may be missing any one of them I don't remember it now 9 M's we say okay based on these 9 M's we are to manage them that is called manufacturing resource management out of these let me ask you which is the resource which is most difficult to manage which is the resource which is most difficult to manage finances is most difficult to manage let me ask, I am asking you a simple question out of the 9 M's or whatever I have said which is the most difficult resource to manage men okay why is it so difficult you can't you are talking only of trust anything more because trust is one thing okay anything more pardon promptness okay skill get is again a skill anything more managing skill okay anything more managing their skills okay the thing which is instantly changing what it is that it varies from moment to moment their emotion their attitude that's the reason I take a single word as attitude okay attitude consists of emotions attitude consists of behavior attitude consists of many more things taken so attitude keeps on changing or more importantly emotion keeps on changing at one moment आपने जैसे कहा था मूड इज अगेन एन इमोशन एक मोमेंट में उसका काम करने का दिल कर रहा है अगले मोमेंट नहीं कर रहा you can't force him to work when he's not in a good mood or he will perform badly you can force him to work that is okay but he will perform badly then quality will suffer so the most it changes from moment to moment हर मिनट में चेंज हो जाएगा अभी बहुत अच्छा है बाद में खराब हो गया मनी के साथ वो नहीं होगा मटेरियल के साथ वो नहीं होगा मशीन के साथ वो नहीं होगा हाँ दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट रिसोर्स टू मैनेज Do you agree with me or not? Most difficult.
नहीं anybody, आप भी इंडस्ट्रियली आप क्लास पढ़ाते हैं, टीचर है ना, नहीं you are a teacher, your attitude, your emotions, or even students sitting, let's say students are sitting in your class, you want to teach them something, they say sir आज तो हमारा मूड नहीं है पढ़ने का, what will you do? You can force them, you can teach them, but what will they learning? No learning. Means quality is suffering, quality in terms of learning. Same is happening here. You can force them to work, but working with for quality and working with quality requires your 100%. वो दिल से जब तक नहीं करेंगे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी. एक और, this is individual. Okay. Another part of the story is when you are going in for manufacturing, there are many functions involved in manufacturing. You are asking the material to come. For that purpose, the material is coming from a vendor. So some sales or the party which is buying the material, or sales department or purchase department, is involved in that activity. Purchase department is involved in that activity. Am I right? For manufacturing, you need the material. The sales purchase department who is purchasing something, it is involved in that activity because material should be available with you for manufacturing. Then HRD department is linked with human resource, enhancement of their capabilities, and management of their talent, management of their skills. Am I right? Yes, two departments. Then any other production is department is involved. Am I right? Production department is to take care of machines. Again, men. Again, material, which are coming from the department of different. Unless you have a team to manage it in a proper fashion, you can't have the right production. You can't have the right manufacturing. So, which component becomes the most important component now in manufacturing? First, resource management was men, material, men. Now, which component becomes the most important, or which process becomes the most important for the manufacturing now? Which process becomes the most important? Management of men, management of their interpersonal relations, management of their individual. Now, when so many activities are involved, means chain is required to be built. Wherever the chain is weak, it is break from that point. Means you will not be getting the right production or manufacturing. From wherever the chain is weak. It may be from the material side, it may be from the men side, it may be at their own place of manufacturing or layout. Wherever the chain is weak, it will break. And the end result will be you will not be getting the quality manufacturing. So what is required is a chain. Chain, what is a chain? Chain is like what manufacturing. Attachment to manufacturing. Attachment means what? Attachment means in terms of men, it is called team. Am I right? Team तो है ना? Team जब तक वो team sales वाला sales department is linked with manufacturing department, production department, or HRD, or if they are not working in tandem, you will not have the right manufacturing. Or can we have the right manufacturing? Let me ask you this way. Can we have the right manufacturing unless the team is right for manufacturing? So, first I said management of men is important. After the management of men, their relationship is important. Their relationship is linked in terms of team. So team is the most important process. Teamwork is the most important process in any manufacturing. So process I will because it is a process. Is the most important process in any manufacturing. And management is the most important. You can make it, but their performance is based on how they are linked with it, how they are involved
in the performance of the team, whether they are 100% involved or they are working in different directions. If they are 100% involved, team will work in life. Otherwise, क्या होगा? काम तो इकट्ठे कर रहे हैं, किसी का दिमाग उधर से, किसी का उधर से, you will not get it. And this is more important in Indian setup. Let me tell you. It is generally we Indians are the first brains in the world. We Indians are the first brains in the world, but as individuals. We Indians are the first brains in the world, but as individuals. When we sit in a team, we are a total different. So for this team and thinking process, team working, right team building is most. Is it clear? On this issue, I am talking. I have given you the background why I started with total entertainment, then linked it with most important as man, linked it with team. Without team, no manufacturing or no project can succeed. There may be endless processes, but unless it is being performed with the nice performance of a team, it can never succeed. Let me give you two examples from the history. There was we were the greatest kings. We had brave Rajputs. We are from Jaipur. So Rajputs were very brave kings. Very, very brave, bold kings. Alexander. Why they lost to Alexander? Because they fought with Alexander. They never should. कहते हैं आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में कहते हैं कि पोरस की हार के क्या उनमें कुछ बहुत सारे और भी कारण हैं और एक इम्पोर्टेंट कारण ये बताया है राजपूत व्हाट हैज इंडिया वो इतना ब्रेव आदमी था पोरस जब उसको अलेक्जेंडर ने पकड़ भी लिया व्हेन ही वाज जो कहते हैं तो के साथ मेरे से कैसा बिहेवियर किया गया तो व्हाट ही सेड ब्रेव मैन एक राजा दूसरे राजा he was a very brave man in spite of all being brave he lost because he was ridiculous had they fought together so this is one part of the story okay another is hand and आपने किसान अपने बेटे के लिए ये स्पोर्ट्स में you remember the story he had 4 sons they were always fighting and one day kisan knew that I am going to die in a few days he called then he gave them sticks 1 stick to each and asked them to break it. All of them broke. Then he asked them to collect all the 4 sticks together and asked them to break it now. They could not break it. From this, the moral united you stand, divided you fall. So same is the process of it. In a team, if you are still sitting without in tandem with each other, you're going to fall. You can never win. That's the reason I said in the history, or even let me take one more. Let's you all watch. India had great players who had made histories in spite of their being there, then it's really difficult to reach the number 1. Most of the times, number 2, 3, 4, whatever. In spite of it. And one more thing, we are trying to organize Indian team. And pinpointing Team India. We want to give a focus on Team India. Because the stress is
always fighting independently, working for their goal, rather than for the New Zealand. एक न्यूजीलैंड की टीम है, आपने देखी होगी. They don't have any great players. Still, they remain at a fairly good number position. Okay. After this all background, let me ask you now the most important question: what is a team? Team is a group. Okay? Anything more to it? Okay. Okay. Now, as you are sitting in Jaipur, my friend at Chandigarh has said, team is a group. Very true. Now you are sitting at Jaipur, few people are around 10 people are sitting. You are a group of 10 people. Are you a team? Are they a team? I am asking you all, are you a team? You are 10 people, because you are a group of 10. Are you a team? ये पहले तो टीम की बात है. Are you a team? Are they a team? Why not? Why not they are not? Why they are not? Huh? Now let me define a team. तीन words इसमें underline कर लीजिए. Team is a group of people. What you are saying? Group of people. First, team is a group of people working in harmony. Second word is harmony. And third is all the achievement of common objective. तीन words group, harmony and achievement of common objective. तीन चीजें important. इनमें से एक then you are not a team. वो तो बैठ जाते हैं. दो चीजों में हार्मनी नहीं है तब भी वो 100% परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है तब भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. ये हमारा मिसिंग लिंक है. हमें टीम बनानी है. वो तो चलो बातें आएंगी ना, डेडिकेशन के बाद. So as I said, team is a group working in harmony or the achievement of common objective. Three issues are important. Second is harmony, and third is common objective. Unless one of them is missing or two of them, it can never be. Common goal, common objective is common goal, one and the same. Okay, तीनों चीजें चाहिए. तीनों चीजों में जो एक भी चीज मिसिंग है वो हम नहीं बन सकते. Now what happens? हम कहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल एक लेटर लिखता है कि दिस इज अ प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू स्कोर एंड वर्क ऑन इट. इज इट अ टीम? ऐसे ही आती है ना कम्युनिकेशन आपको चिट्ठी. वो लीडर मीटिंग की बातें बाद में आएंगी. आई विल बी टॉकिंग ऑन दिस. क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक चिट्ठी निकालता है, तो 4 लोगों के नाम लिखते हैं. There is only their group of nothing beyond it. They do not have the common objective. Okay? Sometimes they may not be sitting in harmony. वे बैठे भी हो सकते हैं. कोई भी चीज मिसिंग है तो ठीक नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है. ठीक है? अब क्या होता है कि when I am some of the people are coming to my program also, and you are sitting in Jaipur, some of you may say कि ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं मेरे भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है. somebody may say, some of the people coming in my program later say सर हम यहाँ पे आए ये भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है. Then I ask a simple question. You may have come to this, but still this may be different. Somebody may have come to Chandigarh to roam here and there, enjoy करूँगा, ताकि इधर-उधर घूमूँगा, होने के लिए. दूसरा कहेगा कि मैं लर्निंग करूँ. तीसरा कहेगा जो करते हैं लोग, तो कहते हैं हमारा डीटी यहाँ पे मेरी ट्रांसफर हुआ, this I am here and I will go to DT, स्टूडेंट वही ट्रांसफर होगा. तो ऑब्जेक्टिव कहाँ है? ग्रुप तो है, हार्मनी भी है, से बैठे कॉमन ऑब्जेक्टिव में.
ठीक है ना, अनलेस से तब तक ये टीम है। यही एक अंडरस्टैंडिंग बार बार ओनरशिप तभी ओनरशिप अगर ओनरशिप तभी होगी हम इंस्टीट्यूशन में अपना डेली जरूरत चल रहा तो प्रमोट करते हैं ओनरशिप। घर में नहीं चलने देते ओनरशिप जब मेरी टीम है हम इकट्ठे तब वो काम ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी दिखानी है तो मैं दिखा भी देता हूँ ऊपर। अच्छा ये कर दो यहाँ पे ये कह रहे हैं ठीक है यहाँ शेयर किसको अच्छा मिनिमाइज इसको F5 ठीक है। This is what I am going to do. Team building. How to build it. First is why team is required. Continuous improvement. I am going to take two topics simultaneously. I am going to talk about problem as well as team building because in Kaizen team is very important. ठीक है, continuous improvement team is required. I don't want to go into a detail of 2000, but if they say the success of the work in Japan after the even rise of two was the world crisis. They worked on this topic. You must have been knowing this 2000, mechanical people will know this. The most important for the success of this Kaizen. What Kaizen means? कहते अगर आपको एक वर्ड सीखना है तो वो ये काइजन आप लाइफ में इट इज जनरली सेड व्हाट डज काइजन मीन। काइजन मीन काई मीन्स चेंज और करेक्टिंग योर एंड zen मीन्स चेंज फॉर गुड। Change is life. Change for good is good. Sometimes change is bad. But change for good is good. Kaizen means time is change. And Zen means change for good. Means compromise. ठीक है? This is a single model. The principle of Kaizen is effective change. The basic fundamental of Kaizen is effective team. In the philosophy of Kaizen, what Japanese say is, we do not want 100% improvement in something. We want 100% improvement in 100%. समझे? We do not want 100% improvement in one thing. If it is happening, but better way, we would like to have 1% improvement in 100%. हर एक में थोड़ी थोड़ी मतलब कंटिन्यूअसली परफेक्ट rather than making 100%. This is the basic philosophy. Yes? Is it clear to you? छोड़ दीजिए मैं आगे चलूंगा। Kaizen होता है when it is viewed as a long-term goal. क्योंकि we are working on 1% improvement in many things. Short-term gain, short-term में एक में improvement किया 100% वो आगे चलता है। इसे long-term goal. धीरे-धीरे base करके improvement कर देते हैं। You are more successful. अब मैं एक एग्जांपल आपका मोबाइल आया मोबाइल में यही बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर तो यही था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया SMS डाल दिया, व्हाट्सएप तो SMS आया, मैसेज आ गया। उसके बाद हमने वीडियो डाल, कैमरा डाल,
ठीक है, म्यूजिक डाल दिया, रेडियो डाल दिया, लाइट टॉर्च डाल दिया, डालते गए ना। तो अल्टीमेटली अब क्या बन गया जी, स्मार्टफोन, इंटरनेट डाल दिया, फेसबुक है, सब कुछ है, मैसेंजर है, सब कुछ, यू कैन डू एनीथिंग। जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट, बेसिक फीचर तो एक ही था ना, यू कुड टॉक फ्रॉम इट, वो धीरे धीरे अब क्या है, जो बेसिक फीचर सारे मोबाइल में एक ही है। सारे आपके स्मार्टफोन जो है वो बेसिक फीचर समझते हैं। अब क्या कर रहे हैं, किसी ने कैमरा में इम्प्रूवमेंट कर दी थोड़ी सी, किसी ने अपने फिंगर प्रिंटिंग ले आया, कोई अपना इंटरनेट का कुछ कर दिया। दीज आर द फीचर्स बीइंग इम्प्रूव्ड नो। स्मार्टफोन में सारे फीचर हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है। इम्प्रूवमेंट इज का कंटिन्यूसली। आप ये देखें कि हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई नई चीज है, कोई मोबाइल को चलाता है, कोई कुछ करता है, बेसिक फीचर्स आते हैं ना। जो स्मार्टफोन है वही बेसिक सारे वही फीचर्स नहीं है, कैमरा कम ही है। कैमरा की कोई फ्रंट में 2 कैमरे ले आया, कोई सेल्फी के लिए इम्प्रूवमेंट कर दिया, किसी ने पीछे की उसका बढ़ा दिया, किसी ने रेजोल्यूशन बढ़ा दिया, यही कर रहे हैं ना। इट इज ओनली प्राइस, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक्निकल और टू ब्रिंग द चेंज। जो चेंज लाएगा वही सक्सेसफुल होगा, चेंज फॉर गुड लाएगा वही सक्सेसफुल होगा। आग स्टैटिक रहते हैं, वही जो 20 साल पहले सबके मोबाइल कौन सक्सेसफुल होगा। हम कहते हैं कि एप्पल सक्सेसफुल, कौन सक्सेसफुल है, और देयर मेनी मेनी को चाइनीज कंपनीज आर सक्सेसफुल। दे आर ऑलवेज एडिंग, चेंजिंग समथिंग फॉर द गुड, or the getting attribute, so that people are attracted to it, and they are more happy and satisfied and delighted. That's the reason this is okay. And the basic principle is in the end, I have to say more. Be not afraid of going slowly. So Kaizen will slowly. Be only afraid of ending. This is a Chinese proverb. कहते खड़े होने से जो स्टैंड स्टिल हो गया वो इज अ डेड मैन। आप थोड़ा सा ना भी मूव करते जाइए, डिफिकल्टीज आएंगी, यू विल कीप ऑन रिमूविंग देम, इंप्रूवमेंट विल बी देयर। यू हैव टू बी डायनामिक। इफ यू आर रिजिड यू आर गोइंग टू fall. Okay? अब आया हूं टीम, another one. Team has got 4 alphabets. TEAM. T means together. E means everyone. A means everyone. And M means more. Together everyone achieves more. क्या मतलब हुआ इसका? What do we really mean by it? Together everyone achieves more. हाँ वो तो है ही है टीम। इसका क्या मतलब क्या निकला? Together everyone achieves more. Achieve more means what? If they were to get 100, let's say you 2 or 3 are sitting, or 3 are sitting, or 4, the output will be, let's say 3 are sitting, the output will be more than 3. अगर आपने एक करना था तो 3 में रह के 3 से ज्यादा आउटपुट दी, right? So because you are some of the ideas, let's say 3 आइडियाज थे, अल्टरनेटिव थे, आपने एक आइडिया था, 3 आइडिया है, 6 आइडिया है, 2 भी आने चाहिए थे, बट व्हेन दे आर मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, अल्टरनेटिव्स आर बेस्ड ऑन योर पिगी बैकिंग। इनके आइडिया को सोच के मेरे दिमाग में कुछ नया आया, उसमें मैंने मॉडिफाई करके समथिंग मोर एडिटिंग एडिट, इसलिए एनर्जी का इफेक्ट, दिस इज अ वर्ड इन मैनेजमेंट said 2 and 2 is 5. In mathematics, it is said 2 and 2 is 4. Am I right? Mathematics में 2 and 2 is 4. In management, it is 2 and 2 is 5. This is synergic effect. What it conveys, when 4 people are sitting, the output is more than the output of 4 people. That is called synergic effect. But I now question you. This synergic effect is true in Japan or many countries which are developing like anything, because they are working on the principle of teamwork. Is it true in India?
We generally used to listen 1 and 1 is 11. But is 1 and 1 11 in India? It is sometimes -1. वो एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहेंगे. That's the reason I said teamwork, team word is very, very, very important for Indian country. I'm going to lot of customers. For any manufacturing, for any project, if there is not a team, they can never be successful. And more so in today's when nobody is self-sufficient. पहले आप कुछ एक्सपर्टाइज आपकी फील्ड में थी, self-sufficient. आज कोई भी कोई भी रिसर्च, वो सिंगल रिसर्च डिसिप्लिन रिसर्च नहीं, चाहे वो मोबाइल ले लीजिए, चाहे ये कंप्यूटर. नो रिसर्च और नो इनोवेशन इज सिंगल डिसिप्लिन रिसर्च. इट इज मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च. ठीक है ना? मोबाइल का एग्जांपल दोबारा लिया. मोबाइल में चिप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है. ठीक है, कैमरा किसका, SMS किसका, इंटरनेट किसी और को, अलग अलग है. वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है. वो मल्टी डिसिप्लिनरी जब तक वो पता है कि लोग इकट्ठे रहते हैं, जब तक वो इकट्ठे बैठ के काम नहीं देंगे, टीम नहीं बनी. और आजकल के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी. अब डॉक्टर की मशीनें हैं, तो लेट्स से स्कैनिंग मशीन. स्कैनिंग मशीन को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है डॉक्टर इंजीनियर. फिजिक्स वाले पर्सन का भी, कंप्यूटर वाले पर्सन का भी उतना unless they understand each other and then they give the technical part of it. कोई टेक्निकल पार्ट एक दूसरे एक्शन करते हैं ना, दूसरा एक ब्रेन में जिसने काम करना. unless these mix together until you generate the machine. अल्ट्रासाउंड नहीं बना रहे, MRP, and no research in today's scenario is single. कोई भी प्रोडक्ट निकालो डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं. क्या ये आपके सामने खड़ा है? ये इसमें एक प्लास्टिक का, ये पूरा इसका, हाँ, एक डिजाइन का काम होगा. उसमें आपने वो हाँ मेटल नॉन मेटल वो एक हो गया. वो एक कंप्यूटर वाले का काम है, एक सॉफ्टवेयर वाले का काम है. फाइनल बात कर रहा है. उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग इतने सारे को इन्वॉल्व करना है. unless all these people together and finalize तो मैन्युफैक्चरिंग तभी तो मिसिंग नहीं. अब हम आउटपुट होते रहेंगे, इमोशन को ही नहीं करने कर पाएंगे तो सर्वाइवल तो बिल्कुल. वी हैव टू बी 111. वो सारी जगह 101 को 11 उसके बिना सर्वाइव नहीं कर. That's the reason it was a very, very important issue. It was important issue, but now it is more important. आपको समझ आएगी कि नहीं, मानते हैं कि नहीं? हाँ जी सर, लगता है ये बड़ा सिंपल वर्ड है ऐसे, पर टीम बनाना सबसे मुश्किल काम है. टीम में नहीं बनेगी. Singles are, as I said, we Indians are the best friends. We Indians are the best performers. Individuals. अब इनको जो ये भी तो एक काम है, ये भी तो किसी का काम है, बॉस है, उसे टीम बनाना आना चाहिए. जब उसकी फॉर्मेशन राइट नहीं है तो टीम काम ही नहीं. तो टीम बिल्डिंग ये अब देखिए चैम्बर में उसका काम हाथ मशीन पे काम करना है. उसका काम क्या है? राइट टीम बनाना. जिसने उसने राइट टीम बना दी, he will, everybody will grow, company will grow, he will grow, every performer will grow. अब क्वेश्चन क्या हुआ? टीम बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट. अब धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ टॉपिक को बिल्ड करने. हम बना दे. मैंने जब क्वेश्चन किया था, आपको एक चिट्ठी आती है, 4 लोगों की लिख दिया, ये जी टीम बन गई. इज इट अ टीम? It can never be a team. So टीम बनाना भी एक आर्ट है.
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखिए एक बार क्या होता है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में हो या किसी में हो, प्लांट आपको प्लांट विजिट्स अलाउ करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट दिखाती हैं, कंपनियों को दिखाती हैं। व्हाट हैपेंड, ये मतुष्ट से कंपनी है, एक बार अमेरिकन ठीक है, दे वेस्टेड देयर प्लांट, आके कहते उसके प्रेसिडेंट को बड़ी कंपनी में कि हम तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट जानते हैं, हम आपकी सक्सेस उससे पूछे क्या, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस, इट्स अ टीम, इट्स अ टीम, ही सेड, जस्ट रीड इट, आप पढ़िए कौन क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है ना कुछ, नहीं साइड पे, सीक्रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन टीम्स, हर टीम है ना, वो टीम पर हम फिर भी you need to do is to put together in groups and something will happen. आप समझ आइए आपको, हमको ये पता लगा टीम सक्सेस है जी, टीम के कारण ये सक्सेस है, तो तुम्हें पता भी लग गया कि टीम के साथ सक्सेस, पर टीम वर्ड या टीम बनाने से तो सक्सेस नहीं मिल जाएगी। तो टीम जब तक इफेक्टिव टीम नहीं बनती, ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया, यू आर थिंकिंग, आर यू डूइंग, ऐसे ही आपको चिट्ठी आई 4 लोगों के एक लिखे ये काम करेंगे, आर यू डूइंग, टीम तो बन गई, बट दैट्स अ बिगिनिंग ओनली, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, हाउ वी आर टू वर्क, वहां पे ईगो क्लैश तो बैठने के बाद ही आएगी ना, टांग की खिंचाई तो उनके बैठने के बाद ही आएगी ना, unless you understand how they will work, people have made a team, how they will work, what are their competencies, what are individual competencies, what are individual weaknesses, how they can work in tandem, how can they be complementary to each other, then team cannot be successful. This is the work of the, उसका काम जो है टीम बनाना, अगर वो अच्छी टीम बना, अगर वो अच्छी टीम नहीं बना वो फेलियर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग भी टीम है, मेरे उसमें भी डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस है, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। लेआउट तैयार है, मशीन में तैयार है, मशीन को टाइम पे आना चाहिए था, नहीं आया, या मटेरियल जो आया, रॉ मटेरियल आया, या जो टीम काम कर रही है लेआउट पे, एक अच्छा काम कर रहा है, दूसरा काम नहीं करता, या कॉम्पिटेंट नहीं है, उसका मूड नहीं है, तो इट कैन नेवर टेक द राइट रिजल्ट। समझ आई बात मेरी? दिस इज द सीक्रेट। अब मैंने टीम की डेफिनेशन बताया, which I have told you. Okay. Now let me ask you, what is the ideal size of it? कितने लोगों को बना के टीम जनरली अच्छी परफॉर्म? I am asking you to give me within some boundaries. इतने से इतने तक वाली टीम आप क्या करते हैं? बाकी हिसाब से, और फिर भी एक मिनिमम साइज क्या होगा कि मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए? मिनिमम 4 to 5 और मैक्सिमम, ठीक है, ओके, व्हाट डू यू से? Very good. And if this is less, let's say 2, is it a team? Because the identification will be there for everybody. Okay. When the group is a big group, also nobody will. So let me give you. Ideal size of a team. Still ideal नहीं है, फिर भी हम ideal करते हैं 5 to 8. I am not saying 5 based on the rules. I am not saying based on something. Somebody
somebody wears three to 10. This is not a Bible. It can be anything. Intending is but more than that. No. कुछ लोग 100% काम कर रहे हैं, sleeping partner. They are unable to give their answer. दूसरा बड़ा ग्रुप हो जाएगा, इसमें कुछ वो प्लस होंगे, डोमिनेट होंगे, डोमिनेट होता है ना, वो डोमिनेट करेंगे, दूसरे जब डोमिनेट करेंगे तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। और ये टीम के लिए क्या चाहिए? 100% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी परफॉर्मर। जब तक 100% नहीं है वो टीम नहीं। इसलिए एक ऐसा जो बीच वाला जिसमें हम एक काम करवा, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्या होगा? प्रोजेक्ट में डेफिनेटली है, बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें सब टीम बन जाएंगे। अब सब टीम में से उनकी जो लीडर है वो लाके बन जाएगी, तो प्रोजेक्ट टीम हो जाएगी। अब टीम बन सकती है ना, इसलिए जनरली वी से द साइज ऑफ द टीम शुड बी नॉट मल्टीप्लाई, एक ही है 8 से 9 10 होते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? द रीजन 5 are the minimum roles. 5 are based on the roles which you have to perform in a team. Role कुछ perform करने दिखाता हूँ। ये लिखा था ideal sizes 5 more than 8, more retiring members and dominated by more individuals. ठीक है? बोलने वाले बोलते ज्यादा बोल करेंगे बाकी डोमिनेट कई बार डोमिनेट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और रेलेवेंट बोल रहे हैं, इरेलेवेंट बोल रहे हैं। दैट्स व्हाट ए क्वेश्चन। वो जब बोली जा रहे तो दूसरा बैठा बेचारा सुन रहा है ऐसा करके, एंड ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, इज नॉट गिविंग द बेस्ट। लेस देन 5, लैक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट्स एंड आइडियाज ऑफ ए वेल बैलेंस्ड ग्रुप। टीम का मतलब था कि एक ग्रुप ऐसा बनाया जिसमें टैलेंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते। इफ दैट इज नॉट फुलफिलिंग ज्यादा आए, अल्टरनेटिव ज्यादा आए, इसलिए टीम के लिए कुछ मेंबर चाहिए। ठीक है, ये मैंने कहा क्यों आर दी रोल। These are 5 important roles which must be performed in a team. Roles क्या है? लीडर, टीम प्लेयर, स्पेशलिस्ट, चैलेंजर, अचीवर। ये 5 कोई आदमी 2 रोल्स में काम कर लेता है, 4 चाहिए, कोई आदमी 3 रोल्स में काम कर लेता है, हमें 3 चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये रोल्स हैं, दिस इज नॉट नंबर ऑफ पीपल। जो 5 to 8 अगर एक परफॉर्म कर रहा है तो फिर 5 चाहिए। लीडर तो आपको समझ आ रही है, वर्ड लीडर क्या करेगा, स्पेशलिस्ट वर्ड भी आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ पे एडिशन हो सकती है, स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट, इट कैन बी 2 3 4 उसी टाइम प्रोजेक्ट में हो गए 5 की जगह 6 7 8 हो गए। ठीक हो गया। नाउ 3 जो आपने नहीं सुने हैं, टीम प्लेयर, चैलेंजर एंड अचीवर। अचीवर भी आपको समझ आता है, वर्ड भी समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब टीम प्लेयर एंड चैलेंजर आपको समझ नहीं आ रहे क्या है। अचीवर इज टॉकिंग ऑफ अचीवमेंट। जब टीम में बैठते हैं तो टारगेट करते हैं, तो पता है यार ये अचीवमेंट नहीं हो रही, यार कुछ करें। He is always talking about achievement. हमारी इतने % अचीवमेंट हुई, हमने कुछ अचीवमेंट होनी चाहिए। He is talking from that. This can be done by role playing also. This is role. Just as a individual, you may be performing a role of a parent, you may be performing a role of a son, you may be performing a role of a husband, you may be performing a role of a father, you may be performing a role of a teacher. आप एक आदमी 5 रोल 10 रोल 15 रोल, मैं यहाँ पे क्या 5 रोल करने हैं। रोल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है ना। और टीम अब मेंबर तो सारे हैं। टीम प्लेयर इज अ पर्सन ऐसा है जो सबके साथ बना रहे हैं, नेगोशिएट करके तो ग्रुप में हार्मनी। रोल
रोल है, मैंने फिर बार बार अगेन दिस कैन बी परफॉर्म्ड बाय लीडर। वो अगर नो इशू, मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजर को हम कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट भी कहते हैं। ये क्या है, सोच रखा क्या होगा, किस चीज को चैलेंज करें नहीं, चैलेंजर ये नहीं। चैलेंजर क्या है, जब आप किसी टीम में बैठे काम करना शुरू, आप कुछ assumptions मिल जाएगा, ये वहां से मिल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वन थिंग। दूसरा, आप कहते हैं कि यार जो टारगेट से अचीवर बात करेगा कि यार ये चीज है जो मैं 1 महीने बाद अचीव कर लूंगा, कुछ टारगेट रखते हो, ये 70% अचीव करो। वन साइड इज assumption, अदर साइड इज कुछ टारगेट्स रखते। इस चैलेंज ये वहां से मिल जाएगा, अगर ना मिला फिर क्या करोगे? He will question you. He will question you everything. On your assumption, I will on your target. आपने टारगेट रखा कि ये जो चीज है, I will be able to achieve this in 1 month. वो कहेगा 15 दिन में क्यों नहीं, या 30-35 दिन में क्यों नहीं? Then you have to justify why it is not there. फायदा क्या होगा? Although this role is never liked by anybody. I think आपको लीडर ने कोई बात की तो कहते हैं भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम कैसे अज्यूम करते हो ये हो जाएगा। इस क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, इस रोल को कोई पसंद नहीं करेगा, इस इंडिविजुअल को कोई पसंद नहीं करेगा, पर इसके बिना गुजारा नहीं। इससे फायदा क्या होता है? इट मेक्स द थिंग्स रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। अजम्पशंस को भी रियलिस्टिक कर देगा, टारगेट्स को भी रियलिस्टिक कर देगा, हाइपोथेटिकल बातें नहीं होंगी जब ये चैलेंज करेगा है? नहीं, चैलेंजर को आप गलत ले रहे हैं, वो चैलेंजर नेगेटिव सेंस में आप ले रहे हैं। ना ना ना, ये बंदा पूरा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, ही इज प्लेइंग ए पॉजिटिव रोल। अगर ये हाइपोथेटिकल चीज पॉलिटेक्निक में है या इंजीनियरिंग कॉलेज में है, आपके रिजल्ट आए, लेट्स से आपके रेट में 50%, आपने एक कमेटी बना दी, प्लेसमेंट आपको बढ़ानी है, ठीक है? आप 50-100% एकदम से लगाने, आपकी टीम बैठी है, वो कहेगी मेरे को वहाँ से कंपनी से ये मिल जाएगा, उसको अपनी कंपनी से ये स्कोर मिल जाएगी, उनके परफॉर्मेंस अपने प्रोग्राम ऐसे हो जाएंगे, ये क्वेश्चन करेंगे कैसे हो जाएंगे। आपने एक टारगेट लिए, मैं ना अगले साल तक 80% प्लेसमेंट कर दूंगा, वो कहेगा कैसे, किस बेस पे कर दोगे? यू गिव मी द बेसिस ऑन विच यू कैन एबल टू 80%, और अगर 80% हो रहे हैं तो 90% कर देती, even question you on everything, then you are justifying, then you are justifying, then you are realistically thinking। आप टीम तो बैठी है, प्रिंसिपल को कुछ लेने के लिए कह दिया कि जी मैं तो 100% अचीव कर दूंगा, क्योंकि आप तो फुली वेल यू नो कि हम नहीं कर सकते। और जब तक ये क्वेश्चन नहीं करेगा टारगेट्स रियलिस्टिक assumptions नहीं आएंगे, so that's the reason this role is वो हाँ कितना ही चैलेंजर है, नेगेटिव रोल है, इसके कारण आपकी परफॉर्मेंस। मैंने कहा ये इसके रोल को एडवोकेट, शैतान का भी क्वेश्चन करता है क्या, उसके रोल को उसकी तरह आपको पसंद नहीं आ रहा है यार, ये रोल उसको किसी को पसंद नहीं आ रहा, जब वो आपसे इवन टीम लीडर को भी कुछ कर रहा है, टीम लीडर को पसंद थोड़ी आ रहा है, ईगो तो उसकी हर्ट हो रही है ना, रोल पर इंपॉर्टेंट है। जब ये क्वेश्चन करेगा तो हाइपोथेटिकल सारे यस मैन इकट्ठे हुए थे, तब सोचना तो नहीं पड़ेगा ना, जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, ये टारगेट तब आएगा नहीं यार ये तो नहीं, हाँ यार ये हमने जो सोचा था गलत, इतना हो सकते हैं, then all will have a concern. That's the reason this mode is very important. ठीक है? वो जो चैलेंजर आप बोलते हैं criticism, I'm not talking positive criticism, this is criticism, but a positive criticism. ये नहीं करा, ये तो निखेत भाई नहीं कह रहा, ये not saying all this.
जो टारगेट्स assumptions को क्वेश्चन करे, ये नहीं करे कि ये आदमी निकम्मा है। इस सेइंग जो हमने अज्यूम किया या जो टारगेट्स प्लान किए वो इतने रियलिस्टिक होंगे, वो उसके कारण डिस्क्रिप्शन के कारण प्लान ठीक हो। जिसने 100% कहा था वो भी तो सोचेगा इसके क्वेश्चन के बाद, हाँ भाई कैसे 100% जवाब तो देख लेते हैं, यू गिव सम डाटा, ये मेरे को मिल जाएगा, एवरीबॉडी विल ये मिल जाएगा, then something of the things will not be available to you also. It will make the things realistic. That's the reason this role is very important. ठीक है, 5 रोल 5 आदमी भी कर सकते हैं, 3 आदमी भी कर सकते हैं, और स्पेशलिस्ट आप ऐड करते जाएंगे अकॉर्डिंगली द साइज ऑफ द टीम इज इट क्लियर? बाइबल नहीं है ये, पर फिर भी बाइबल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स नॉट ए बाइबल कि जो मैंने कह दिया 100%, ये है रोल पर जरूरी है इफेक्टिव होने के लिए, हार्मोनी रखने के लिए भी चाहिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए भी चाहिए, स्पेशलिस्ट भी चाहिए ना, अचीवर भी चाहिए, नहीं तो सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये है रोल। आपको समझा क्वेश्चन, टारगेट्स, assumptions ऑफ द टीम, ठीक है ना? इज इट क्लियर? एलिमेंट्स ऑफ अ टीम शुड हैव अ पर्पस, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज शुड बी डिफाइंड टू एवरीवन इंडिविजुअल, एक्टिविटीज शुड बी डिफाइंड, effectiveness in terms of harmony, नीचे जो आया, ठीक है? Decisions should be based on consensus. Results gives you motivation. Small results are there. Recognition gives you again motivation. अगर टीम कोई काम कर रही है तो recognition नहीं मिलती तो मोटिवेशन नहीं मिलती, आगे नहीं काम। These are elements of an effective team. ठीक है? This is a must. अब मैं आपको एक क्वेश्चन करने लगा हूँ। I am going to again question you. क्वेश्चन ये है, अब एक टीम बना दी आपको, बहुत से यू रिसीव अ लेटर कम्युनिकेशन फ्रॉम योर डायरेक्टर और प्रिंसिपल दैट देयर इज सम प्रोजेक्ट, ठीक है? एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, उसकी छुट्टी आई, इंटरव्यू और 4 लोगों को, तो आप इनको बैठ के इस प्रोजेक्ट को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है? If it is a project, recognizable project, ठीक है? ये let's say it's a recognizable project. आप 5 लोग तो you are the member of a team जिनको इस पर काम करना है, and by this date is the date. You may be doing something about yourself or others, or you may not know. उनके क्वालिटी जो में और मेहनत, आप एनी मीटिंग या मैं आपको बिल्कुल रिलेटेड पिक्चर में लाऊंगा टीम जैसे काम और डिटेल मीटिंग प्रिंसिपल ने ये भी फिक्स कर दी कि जो पहली मीटिंग आप या आसपास करो, योर मीटिंग इज फिक्स, नाउ यू एज 5 or 6 यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट मीटिंग, ठीक है? फर्स्ट मीटिंग में आप जा रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग as a member, क्या फीलिंग? Think of it realistically and let me know. This is very important because यही जो होता है टीम डायनामिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। आप एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या होगी एज ए मेंबर? हाँ, ठीक है, जैसे वन और क्या होगा? फीलिंग नहीं ना, तो फीलिंग तो आपके अंदर आएंगे ना, और क्या आएगी? ओके, थिंकिंग मोड। अब मैं बताता हूँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? हाँ, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना? और अब मैं फीलिंग यही बताने वाला, मेजर 2 तरह की फीलिंग। एक खुशी थी क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, इसका मतलब मेरी कोई तो कैपेबिलिटी है विच इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, आई एम फीलिंग ऑनर्ड इनसाइड। Responsibility, considering very well that I am some knowledgeable, some talented, something like that, कि मेरे में कुछ तो है, this is a positive feeling. Second feeling,
अब ये भी होगी कि मैं जो कर रहा हूँ ये परफॉर्म कर लूंगा कि नहीं, मैं जो उसने सोचा है मेरे बारे में, मैं उस जो बेंचमार्क रखा है उसको फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। डाउट और कंफ्यूजन और उसको सुधार किया, ये भी फीलिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ फीलिंग। इज क्लियर? फर्स्ट फीलिंग जो है नाउ रीच्ड वाली मीटिंग, आपको टीम डायनेमिक्स में समझा रहा हूँ, ये समझ गए तो आपको टीम की परफॉर्मेंस है। अब से फर्स्ट मीटिंग हो रही है, 5 लोग बैठे हुए हैं, हाउ विल दे बिहेव, क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू। आप अपने बिल्कुल रियल सिचुएशन सोच, वो क्या करेंगे। एनवायरमेंट कहां से आया, अभी तो बैठी है 5 लाख, एनवायरमेंट तो आया ही कुछ नहीं। अभी तो एक एक चिट्ठी मिली है जिसमें आप 5 लोगों के नाम है, यू आर गोइंग फॉर द मीटिंग, यू आर नॉट सिटिंग इन ए फीलिंग, हाउ विल व्हाट विल बी द फीलिंग, टीम लीडिंग। अच्छा वो किस बेस पे करोगे। टीम में पहली फंडामेंटल आप बता देता हूँ जो आप भूल जाते हैं। टीम में जब सीनियरिटी की बातें होगी तो टीम फेलियर हो, ओके। इट शुड बी बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट। भाई तो पढ़ाना सर, बस आप खत्म कर दीजिए, ठीक है। ये भी अगर 15-20 मिनट 15 मिनट ना। अब कॉम्पिटेंसी भी के बेस पे टीम वो सक्सेसफुल है जिसमें कॉम्पिटेंसी के बेस पे लीडर है। अच्छी इज नेवर एन इंपॉर्टेंट इशू। जिस दिन अच्छी के बेस पे टीम बन गई वो इको प्ले और कभी टीम सक्सेसफुल है। हमारी फंडामेंटल फेलियर है, हम आते हैं देखते हैं यार ये टीम ने लीडर बना दिया, चेयरमैन हो गया। दैट इज द फेलियर ऑफ अवर टीम। टीम शुड बी बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल लीडर। फर्स्ट पॉइंट ठीक हो गया, कैपेबिलिटी फॉर दैट प्रोजेक्ट। Pardon? हाँ? So what? तभी तो हमारी फेलियर हो रही है भाई। Let me interrupt you. हमारा सिस्टम जो रहा हायरार्चिकल सिस्टम था, ठीक है, हायरार्चिकल सिस्टम था। और मल्टीनेशनल जो क्या है फंक्शनल सिस्टम है, वहाँ हायरार्ची की बात नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं वो उसके हिसाब से कॉम्पिटेंट है। ये नहीं कि जो सिर्फ बेस्ट फिट फॉर एवरीथिंग, दैट्स नॉट देयर। समझे? तभी तो मैं कह रहा हूँ डायनामिक्स नहीं समझ आ रही हमें। हायरार्ची इज नॉट ए टीम। हायरार्ची जो आ गई फिर तो बाकियों की परफॉर्मेंस अपने आप ही खत्म होगी। जो आप कह रहे हैं वो लोअर है वो हायर है तो वो तो बोलेगा ही नहीं टीम कहाँ, देयर इज अ टीम देन। यही तो कल्चरल शिफ्ट लानी चाह रहा हूं मैं, यही तो प्रॉब्लम है हमारे पास। हायरार्ची से टीम का लीडर नहीं किया, इट्स बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंसी। समझे? अब मैं बिल्कुल उल्ट बोल रहा हूँ जो होता है। तभी तो हमारी मैं वी इंडियंस आर द बेस्ट ब्रेन। वो वही बहुत ब्रेन जो बाहर जाते हैं तो वो काम कर देते हैं क्योंकि वो टीम में जान जाते हैं काम करने, यहाँ नहीं जानते। यहाँ पे वही इंटेलिजेंट लोग, उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिलता, जितने मर्जी ले लिए, बाहर जाने के बाद ही उन्हें नोबेल प्राइज मिला, बिकॉज दे स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू वर्क इन ए टीम। और इंडिविजुअल किसी को नोबेल प्राइज, टीम होती है काम करती है, मिलता है एक को नाम होगा, ओके, बिकॉज दे न्यू, दे हैव कम टू नो हाउ टू वर्क इन ए टीम। अब लीडर जो मर्जी करो, लीडर चुन लिया आपने, और क्या होगा? आपकी फीलिंग बात करना, और क्या होगा? व्हाट विल यू डू मोर? शेड्यूलिंग कर लिया, जो टारगेट रख लिया, असम्पशन रख लिया, कुछ रख लिया, दिस इज ओवर। इसमें क्या लोग सारे अपने पत्ते खोल लेंगे? इसमें कितना बोल लेंगे? बिकॉज मैंने एक बात कही थी, कुछ ही कुछ अब किसी के भी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, nobody can dominate in it। अगर सब कुछ पता ही होता तो फिर प्रोजेक्ट क्यों बनाते, टीम को बनाने की जरूरत ही क्या थी, मल्टीपल डायरेक्शन से डालने की जरूरत क्या थी? अगर सब कुछ ही डिफाइंड पाथ पे है तो कर रहे हैं कुछ नहीं, अनडिफाइंड पाथ भी है ना, ठीक है ना। इसमें पहली मीटिंग में लोग अननेसेसरी नहीं बोले, इसमें कोई डोमिनेट नहीं करेगा, सारे थोड़ी थोड़ी बात,
जैसे तो रियल टीम अगर जो डायनेमिक्स करते हैं जो है, ठीक है। अब आप सबको पहली मीटिंग के बाद सब एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे। हो सकता है अननोन पीपल भी तो हो सकते हैं ना टीम में। अब थोड़ा बहुत आप समझिए अननोन की टीम बन गई एक, जो आपकी को dominate कर सकती है। उनको आपकी कॉम्पिटेंस नहीं पता, आपको उनकी नहीं पता। हाउ कैन एनीबॉडी डोमिनेट, हाउ कैन बी एनीबॉडी अ लीडर। डिस्कशन के बाद ही लीडर बनाओगे ना, उसमें राज्य छोड़ दिया गया। वो तो एक सिचुएशन है ना, ठीक है ना। वो भी अब आपने कुछ टारगेट्स बना लिए, कुछ assumptions ले ली, फर्स्ट मीटिंग में हो गया। नोबडी इज वेरी vociferous, नोबडी इज डोमिनेंट। हमने लीडर बना लिया, चलो बना लिया, सब कुछ कर लिया, कोऑर्डिनेटर कर लिया कुछ। देन यू पिक्स अप द सेकंड मीटिंग, ठीक है। अब सेकंड मीटिंग में यू नो ईच अदर बेटर देन फॉर द फर्स्ट मीटिंग। आप जानते हैं ना, अब आपको पता है कि मेरी ये कॉम्पिटेंसी है, ये इसके पास नहीं है। इस चीज में मैं कॉम्पिटेंट, जिस चीज में आप कॉम्पिटेंट हो उसमें आप ज्यादा बोल लेंगे। अब दिखाने की कोशिश करेंगे मैं वन अप हूँ, इससे ज्यादा जानते हो तो वन अप हो गया ना। आई विल ट्राई टू परफॉर्म इन दैट डायरेक्शन। मीन्स अब क्या होगा, हर कोई वन अप होने की कोशिश करेगा सेकेंड मीटिंग। फर्स्ट स्टेज को कहा जाता है फॉर्मिंग, जो बनाई थी ना जैसे पहली मीटिंग का, दिस इज कॉल्ड टीम फॉर्मिंग और फॉर्मेशन। फॉर्मिंग बिकॉज टीम इज एन एक्शन, काम है ना, एक्शन, एक्शन वर्ब है, तो इससे फॉर्मिंग इंग लगा के मैं बात करूंगा फॉर्मिंग स्टेज पे, ठीक है। अब थोड़ा सा जब डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, हर कोई बोलेगा ज्यादा, जब एक ज्यादा बोलेगा कम बोले या क्योंकि सब बोल रहे हैं अभी बड़ी नोबडी कोई यही नॉलेज है मेरी, जो कहेगा मेरे को इस चीज में ज्यादा तो तेरे को क्या आता है। अब आपकी हिंदुस्तानी सिचुएशन आ रही है, अब आपकी हिंदुस्तानी सिचुएशन आ रही है ना, यही है ना सिचुएशन। तेरे को क्या आता है, मेरे को आता है, मेरी सुन पहले। I never said you should not have you are a knowledgeable person. I never said so. I said for most competent person he should be team leader. मैंने तो कहा ही यही है, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन फॉर दैट एक्टिविटी शुड बी टीम लीडर। मैंने हिराची की तो बात की ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। हिराची से टैलेंट नहीं आती, आप प्रोफेसर या प्रिंसिपल बन गए, ये इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मोस्ट टैलेंटेड है, आपका जो प्रोफेसर है या टीचर वगैरह है वो आप समझिए मेरी बात। I said the most talented or the most knowledgeable or most skilled or that activity should, ये मैंने कहा, ठीक है ना। इज इट क्लियर। सेकंड स्टेज जो मैंने वन ऑफ मैन, दिस स्टेज इज कॉल्ड फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग हाल से रेडियो नोबडी इज लिसनिंग, देखिए दिस स्टेज इज लॉ, ये काफी देर से किसी की नहीं। थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में वो कुछ बंदे जो अक्लमंद हैं, जो टीम प्लेयर हैं, जो टीम अचीवर हैं, वो कहेंगे भाई क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी टीम बनाई थी प्रिंसिपल ने, डायरेक्टर ने, कुछ करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं आपस में, बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत लेके बड़े बैठे थे, जुलंतरों की टीम बनाई है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ कर लो। कहेंगे ना, कोई कहेगा ना यार क्या कर रहे हैं हम, इज्जत का सवाल है, इज्जत तो है ना, यू आर एक्टिंग एज अ टीम, बार बार मुझे इतनी बड़ी अच्छी टीम बनाई है जी, दे विल परफॉर्म, हम कुछ करेंगे नहीं तो बेइज्जती होगी, ठीक है ना। वो इस तरह की काम करेगा, थोड़ा सा आपका टेम्पर नीचे आएगा, तो समझ आनी शुरू हो गई भाई गुजारा नहीं, आप तो बैठे हैं तो इकट्ठे हैं, तो हार भी इकट्ठी है और जीत भी इकट्ठी है, ठीक है ना। अब वन अपमेंट की अभी थोड़ी सी है, पर धीरे धीरे खत्म होनी शुरू है। अब उन्हें पता है कि मेरी ये कॉम्पिटेंसी है, इनकी ये कॉम्पिटेंसी है, इनकी ये कॉम्पिटेंसी है, हमें अगर कॉम्पिटेंसी कॉम्प्लीमेंट्री बना के चलेंगे तभी गुजारा होगा। एक दूसरे की करेंगे तो वी विल नेवर विन, वी विल ऑलवेज लूज। तीसरी स्टेज में जाता है, दिस स्टेज इज कॉल्ड नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज काफी लंबी होती है, तो इंडियन कल्चर भी ले सकें, स्टॉर्मिंग स्टेज बड़ी लंबी होती है। फॉर्मिंग तो चलो एक आध मीटिंग में हो गया, दैट इज फॉर्मिंग, थोड़ी सी यूनाइट हो गया। स्टॉर्मिंग स्टेज सबसे लंबी स्टेज होती है,
नॉर्मिंग की बात होती है, नॉर्मिंग में भी थोड़े बहुत टेम्पर हैं, नॉर्मल हो रहे हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं, वो कुछ उससे छोटी है। एंड जब नॉर्मिंग होगी देन परफॉर्मिंग, वो स्टेजेस पर परफॉर्म। क्लियर? क्या स्टेजेस हुई? फॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। यही होता है ना, यही होगा, यही होना चाहिए और ये चीजें चाहिए। इतना ना खींच दीजिए तो वो एक दूसरे को नुकसान करे, ओवरऑल प्रोजेक्ट को नुकसान करे। वो स्टॉर्मिंग से लंबी होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इतना लंबा ना कर दीजिए कि आपके अचीवमेंट सब कर। आपके टीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम प्लेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रोल कर। अगर ये रोल ना हो तो लड़ी जो बैठा है वो भी अचीवर भी कोई बात ही नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन कब होगा दिमाग में, कब बाहर पड़ेगा, यार फेल होगी तो इज्जत गई। फिर वो हारमोनी वाला क्या करेगा, इनकी बनाने की, यार इसकी मेरे से बनती है, इनकी इससे बनती है, वो इनको जोड़ेगा। दैट इज द रोल। अभी मैंने रोल्स कहे थे, अब अंडरस्टैंड करते हैं रोल्स की इंपॉर्टेंस। अब जो बना रहा है, टीम बिल्डिंग बना रहा है, टीम बना रहा है, उसको ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन इनमें से लीडर हो सकता है, कौन इनमें से चैलेंजर हो सकता है, कौन इनमें से अचीवर हो सकता है, कौन इनमें से प्लेयर हो सकता है, कौन स्पेशलिस्ट है। जिस दिन वो टीम बनाने वाला ये अंडरस्टैंड कर गया, वो टीम बन गई। अंडरस्टैंड दिस इज कार्टून। समझ गया? इज इट क्लियर टू यू? बड़ा मुश्किल काम है, ये लग नहीं रहा। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, लगता बहुत आसान है। ठीक है, और भी बता देता हूँ आपको, ये मैं सुना नहीं रहा आपको, ये सारा स्टेजेस दिखाइए, प्रोग्रामिंग। इसमें वो टेम्परामेंट है, सोशल, आपकी वो इश्यूज तो मैंने टच नहीं किया। ये बहुत बड़ा लेक्चर है, छोटा नहीं है। इसमें ग्रुप डायनामिक्स को टच करने के लिए टास्क कैसे होगा, सोशल आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, मैंने जनरल वर्ड्स में पर आपको समझा दिया। ठीक है, अब एक ग्राउंड रूल्स फॉर इफेक्टिव टीम का, फर्स्ट रूल एवरीवन इज इक्वल। ये जब तक नहीं होता टीम नहीं बनती। क्लियर? ये हमारे में रांची जब आती है तो फेलियर तभी होती है। एक मुन्ना भाई एमबीबीएस आपको याद है, में वो जाके जो स्पीकर होता है उसको जप्फी डालता है, अब करते हैं स्पीकर की परफॉर्मेंस, और उसमें कैसे वो कहते हैं मेरे को जिंदगी में किसी ने नहीं कहा, उसको बार बार पैर लगाता है, कोई बात नहीं तू कर, ये तो स्पीकर गालियां देता है, पहले गालियां दे रहा होता है। देखिए हर एक सिचुएशन में यही ना समझाने का, एवरीबॉडीज रोल इज इम्पोर्टेंट। आपकी टीम में कॉलेज चल रहा है, स्वीपर का भी रोल उतना इम्पोर्टेंट है। आप लोग तो क्लास में बैठे आपको पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाओगे, तो आपको बीमार करेंगे। सो एवरीबॉडीज रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोल की आपको बात करनी है। सेकंड, नो वन शुड बी डोमिनेटिंग, मैंने कहा डोमिनेट नहीं करने देना। एनीवन कैन मेक सजेशन अबाउट हाउ द टीम शुड, आपको अलाउड है। परफॉर्मेंस कब होती है, जब आपके मेंटल स्ट्रेस नहीं। ठीक है जी, it should be constructive. Criticism is a must, challenger role is a must, but it should be constructive. टांग नहीं कीजिए, तू तो निखेदा तेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं बोल। आपको उसकी वीकनेस पता है, उसे सपोर्ट कीजिए, उससे काम, क्योंकि टीम में आप यू आर गोइंग टू विन टुगेदर, यू आर गोइंग टू लूज टुगेदर। ये नहीं होगा लूज में बाहर जाके नहीं जी इसके कारण लूज होता है, ऐसा नहीं होगा ना। वो तो बेसिस सबकी बराबर, जीत भी सबकी है, हार भी सबकी। Individual weakness is not highlighted. Individual strengths used for the team, health and progress of the team are important, very very important. Effective कुछ भी होंगे और प्रोग्रेस भी चाहिए, ये नहीं कि अब हारमोनी बना ली आगे कुछ नहीं, दोस्ती हो गई थी बहुत बढ़िया, वी आर एंजॉयिंग फ्रेंडशिप, प्रोग्रेस भी दो। ठीक है जी, क्या टाइम हो गया मनीष? क्या और पढ़ना पढ़ाने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, 2 घंटे और बोलता रहूंगा। है नहीं, मेरे को मनीष, मैं आज कुछ बिहेवियर्स दिखा रहा हूँ which are not conducive for teamwork, which we generally do.
आप इसको 1 मिनट में देख लीजिए। देखिए, बिहेवियर इज नॉट कंड्यूसिव व्हाट यू आर। नहीं नहीं, मेरी बिहेवियर है नहीं, वहां भी है ना, वहां भी बैठे हैं सेंटर में। So let me conclude here in 2 minutes time. These are just listen, man. These are 3 slides I'm going to show. These are behaviors not conducive for team, और जो हम परफॉर्म करते हैं। आप पढ़ लेंगे तो इससे आप समझते जाएंगे। Ostrich behavior क्या? Who buries his head or her head in sand and refuses to face reality or admit there is any। हम क्या करते हैं? अपने आप को टीम में बैठे हुए भी ऑस्ट्रिच बिहेवियर है, आंखें बंद कर ली, मूंद ली, मैं तो पार्ट ही नहीं हूँ उसका, 100% परफॉर्म नहीं कर रहा, अंडर परफॉर्मिंग, ये बिहेवियर नहीं चाहिए। बड़ी दुनिया करती है क्योंकि वो दिल से नहीं है। जिराफ, जैसे जिराफ क्या ऊंचा, वो सबको नीचे की तरफ देखेगा कि ये सब ऐसे ही है, मैं ही सुप्रीम। ऐसा बिहेवियर तो नहीं चाहिए ना टीम में। तो अभी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टीम पढ़ गए, एवरीवन इज इक्वल, शॉर्ट वाइज, हू ड्रॉस फ्रॉम द ग्रुप रिफ्यूजिंग टू गिव और हर आइडियाज फॉर ओपिनियन। ओपिनियन है तो छोटा सा इसी तरह का बिहेवियर इसका होगा। और ये दैट बिहेवियर, मैं क्या यार, इतनी बड़ी आप बड़े बड़े आंसर हैं, मैं क्या काम करूंगा। When you are in a team, you should give your best as per your competence. Speak up, show off. अगर कुछ नहीं बाहर से show off, करना है ऐसा कोई नहीं। Who's too timid to speak up on anything? मैं यार, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मैं क्या बताऊंगा, तुम यार बड़े बड़े लोग हैं, हमारा नॉलेज बहुत है, मेरा ऐसा बिहेवियर नहीं। बनाया तो कोई कॉम्पिटेंस होगी, गिव योर कॉम्पिटेंस, आर्टिकुलेट टीम के कोई नहीं है ना टीम में, जिसने बनाया उसे कुछ सोच के तो आपको डाला होगा ना। तो आप जाके क्या यार, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, शो ऑफ करें, मैं क्या कर सकता हूँ, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। इट इज ऑन वन साइड पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, और दूसरी साइड सेल्फ एस्टीम आपकी कम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, दोनों ही नहीं चाहिए, दोनों नेगेटिव है टीम के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो बैड, लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो बैड। मंकी जो फजूल की बातें तो करेगा, काम की बात नहीं करेगा। कैट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग, इट्स नो मैं क्या कर सकती हूँ, ऑल्दो दिस बिहेवियर इज वेरी डेंजरस। कैट आपको दिखती बड़ी सिंपैथेटिक है, होती है क्या डेंजरस। जो बोल दिए आगे बात में गलत है, वो ठीक है मानना, ठीक है। रैबिट के बिहेवियर को तो बात चल रही थी, आप जैसे कई बार आपने देखा होगा टीम में बैठे हुए बात किस टॉपिक की चल रही थी, इन्होंने बात ही बदल देनी है। फ्लाइट बिहेवियर, जैसे क्या फ्लाइट अनप्लेजेंट नहीं होने देना, बात ही बदल देना, जैसे करना रैबिट बिहेवियर। लॉयन बिहेवियर, लॉयन तो जी मैं सुप्रीम हूँ, मेरी सुनो, मैं किसी की नहीं सुनता, ठीक है। स्नेक बिहेवियर, अनदर डेंजरस बिहेवियर। यहाँ तो आपके साथ बड़ी अच्छी तरह, बाद में जाके प्रिंसिपल का चुगली लगाएगा, वो नहीं करने देता, वो गंद डाल रहा है, वो ऐसे कर रहा है, यहाँ आपको बहुत अच्छा देखेगा, बाहर जाके डांट। These are all dangerous behaviors which you should not perform. Elephant, stubborn behavior, छोड़ दीजिए। Rhino क्या करेगा? वो charges around putting his or her foot in it and upsetting people unnecessarily. ऐसी बात करेगा कि सारों का टर्मोइल मचा देगा। राइनो का पंजाबी में कहते हैं इसे, खुद मारना पंजाबी में कहते हैं। में एक ही बात करता था, ऐसे तीन बैठे थे या तो ऐसे मीटिंग मीटिंग चल रही थी, मेरे को उठ के आके गाड़ी में वो कहना पड़ा, यार जागो, तेरे को देख के सारे हंस रहे हैं, उठाना पड़ा, वो बासी मारा। Everybody is getting this job. This type of behavior many people follow. Owl, who looks very strong and pretends to be wise.
ऑलवेज टॉकिंग इन लॉन्ग वर्ड्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। आउल को अंग्रेज लोग पर सबसे इंटेलिजेंट एनिमल मानते हैं, आपको पता है क्यों? उसकी दो क्वालिटीज होती हैं। आउल की दो क्वालिटीज हैं। हम उसे उल्लू कहते हैं, हम नेगेटिवली लेते हैं, पर आउल को ब्रिटिश पीपल वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। क्यों? दो रीजंस। जब सारी दुनिया जब होती है ये जागता है, और दूसरा ये अपनी गर्दन को 180 घुमा लेता है, आप नहीं घुमा सकते, कोई भी बॉडी नहीं घुमा सकता, ये करता है। और कोई नहीं जो दुनिया पीछे भी देख सके, आगे भी देख सके, इससे ज्यादा इंटेलिजेंट क्या हो। एंड लास्टली, better not belong to any of the above I want to be a and all मैं ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगाया, but I could have explained it better. This is all I wanted to say. Any questions? I was trying to give started with a background and concluded whatever I can. ठीक है जी, आप अलर्ट हो गए। Any questions from my friends at center? Anything you want to ask me? Sure. Any questions? Any queries? Most welcome. Any queries? नहीं, वो तो अपने आप we are listening to us. If there are no queries and no questions, then very heartful thanks from my side. Thank you very much, friends. चलो जी, ये आ गया कोई? तो दिख रहा है क्या? हैंड रेज करें। ओके ओके No question, sir. सर हेलो, मतलब कोई क्वेश्चन है क्या? वो हैंड रेज कर रहे हैं। No question, sir. Thank you, sir. हैंड राइज नहीं कर रहा,